Good morning, students. We learned today about the electric field intensity due to the point source charge. ठीक है ध्यान रखना. और I need to calculate the electric field intensity at any point P in space. We select a point charge Q, a point source charge Q at any point. ध्यान रखना. To calculate the electric field at any point P, we take a point source charge Q at a point O. Okay? The position vector of the reference point P with respect to the point O is vector R. It means vector OP is equal to vector R. Okay? When we place a test charge particle Q naught at reference point P, this test charge particle experience an electrostatic force F. We calculate the electrostatic force which is applied by the source charge on test charge particle by Coulomb's law. Then we know that the electrostatic force at test charge particle due to a point charge Q, according to Coulomb's law, KQ into Q naught upon vector OP is square into vector OPK. Vector OP is equal to vector R. Then here we take Q naught upon mod vector R square into R cap equation 1. Due to definition of electric field intensity, we know that the intensity at any point P vector E is equal to vector Fe upon Q naught. इसको यूं भी लिखे हैं लिमिट Q naught tends to 0 vector Fe upon Q naught where Q naught is very less charge particle. Putting the value of electrostatic force from equation 1 in this formula, we get limit Q naught tends to 0 under bracket Q naught upon mod vector R square into R cap. Then we write it upon Q naught. Q naught से Q naught cancel हो जाएगा. Here we get K into Q upon mod vector R square into R cap. Numerically, it is equation 2. Numerically, we write it as E is equal to कितना K into Q upon R square. Here we see that the electric field intensity at any reference point P, it depends on the amount of source charge, and it is square distance inversely proportional to the square distance between source charge to reference point. ये हमारा कैलकुलेशन रहा. अगेन अब हम इसको ध्यान देना. सबसे पहले we select a source charge Q at any point P. To calculate the electric field intensity at any point P due to source charge Q, have the position vector
vector OP is equal to vector R. When a test charge particle, positive test charge particle, is placed at reference point P, it is experienced an electrostatic force like vector Fe. According to Coulomb's law, we calculate the electrostatic force experienced by the test charge particle due to source charge. Vector Fe is equal to k q q naught upon vector OP square into OP cap. k q naught ये है यहाँ पे q1 into q2 by r square होता है. Here vector OP square into OP cap. Vector OP is equal to vector r दिया गया यहाँ हो गया. यहाँ पे OP cap का मतलब r cap हो जाएगा. According to definition of electric field intensity at any point P, we know that vector E is equal to limit q naught tends to 0 vector Fe upon q naught. Here, putting the value of vector Fe from equation 1 in this formula, we get limit q naught tends to 0 k q naught upon vector r square into r cap upon q naught. Upon q naught ये definition से q naught से q naught cancel हो जाएगा. Again we get vector E is equal to k q upon vector r square into r cap. Here we find out the numerical value of intensity. E is equal to k q upon r square. Here we see that first, यहाँ पे E is directly proportional to Q. It means the amount of the numerical value of the electric field intensity at any point P due to source charge is directly proportional to the amount of source charge. And in other hand, we see here E is directly proportional to 1 upon r square. It means the electric field intensity at any given reference point due to source charge is whole inverse square law. It means it is inversely proportional to the square distance between OP. अब हम इसकी थ्योरी को लिखते हैं, देखते हैं थ्योरी क्या होती है. ध्यान देना. Electric field intensity at any point P due to a source charge Q, where vector OP is equal to vector R. Okay, यहाँ पे ध्यान. Source charge is placed at a point O in space. ये मुझे जानना, दो चीजें मिली. एक है ये, दूसरा है सोर्स चार्ज मान. अभी हमें माइंड में ध्यान रखने क्या कहा. When a positive test charge particle q naught, ये यहाँ पे ध्यान. When a positive test charge particle is placed at given reference point P, experienced and
electrostatic force vector Fe is equal to K Q naught upon mod vector R square into R cap equation 1. To calculate electric field intensity at any point P at the reference point due to a source charge Q where vector OP is equal to vector R and source charge is placed at a point O in space. अब ध्यान रहे हैं due to definition of electric field vector, we know that vector E is equal to limit Q naught tends to 0 vector Fe upon यहाँ पे Q naught. When यहाँ पे पुट करेंगे is equal to K Q naught, इसको लिमिट रखेंगे यहाँ पे when Q naught tends to 0 K into Q naught upon mod vector R square into Q naught R cap कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर E is equal to K Q upon mod vector R square into R cap इक्वेशन नंबर 2. ये प्रोसेस इसका जानना निकालने का और लिखने का तरीका ये. नेक्स्ट आगे देखते हैं. Numerically we get E is equal to PQ upon R square. We see that first electric field intensity at any point P due to point charge point source charge is directly proportional to amount of source charge. It means E is directly proportional to. Second, E is inversely proportional to square distance between
OP. It means E is directly proportional to 1/r square. ये दो चीजें आपके सामने ध्यान रखें। थर्ड में हम आएंगे if source charge Q is placed in a medium of dielectric constant epsilon, then electric field intensity in medium EM is equal to E upon epsilon. ये तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ना, EM is equal to K Q upon epsilon R mod vector R square into कितना R कैप इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। K is equal to कितना होता है? K is equal to 1 upon 4 by epsilon Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ ना, तो ये क्या बन जाएगा EM is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon into Q upon mod vector R square into R। ये फॉर्मूला ओके। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P at any point P due to point source charge is directly proportional to amount of source charge I is directly proportional to, यानी कि amount of charge जो source charge हम select कर रहे हैं, ये जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस जितना ही आप बढ़ाते जाओगे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और यदि मीडियम में आपने रख दिया, if the source charge is placed in any medium of dielectric constant epsilon, तो इसके कारण epsilon के कारण यानी मीडियम के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। चार्ज जो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इतनी चीज़ें इसमें, यानी 4 बातें इसमें क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये 4-5 चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है सामने है। इसके बाद आ जाए कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट होते हैं, स्पेशल फैक्ट क्या है, इसको देखते हैं। पहला तो इसमें मान लो आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इस पर हम मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं Q
और ये नेगेटिव चार्ज भी मैग्नेटिक। तो चार्ज में फोर्स कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ध्यान देना। पहला, when a charge plus minus q is placed in electric field vector E, then electric force या electrostatic force electrostatic force acts on that charge is कितना करना वेक्टर Fe is equal to plus minus q और यहाँ पे जाए कितना वेक्टर E। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि वेक्टर E is equal to वेक्टर Fe अपॉन q, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करने के वेक्टर Fe is equal to कितना q वेक्टर U। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान रखना कि यदि पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें ध्यान रखना A, if Q will be positive, Q will be positive, then vector Fe and vector E, vector E, both are in same direction, in same direction। लेकिन अब यहां पे जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, if Q will be negative, then vector Fe and vector E both are in opposite direction, opposite direction। अब इसमें देखो ध्यान देना, इस पर जो Fe वर्क करेगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द फील्ड। इस तरह से ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि if any point charge is placed in any electric field, then the charge Q experience an electrostatic force vector Fe is equal to plus minus q vector E. The direction of the electric force in field on that charged particle is that charged particle depends on the nature of the charge which is placed in there. If Q will be positive, ये जो चार्ज आप फील्ड में रख रहे हैं यदि वो पॉजिटिव है, then vector Fe यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड वेक्टर E यानी कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। बट इन अदर हैंड, if the point charge Q will be negative, then the direction of force and direction of electric field both are in opposite direction to each other. Okay? तो ये फोर्स किधर रहेगा, ये कोई चार्ज किसी फील्ड में रखा जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, कितना होगा, ये न्यूमेरिकल है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी बात करते हैं
According to Newton's law, we know that when an external force applied on any particle, then particle will be accelerated. So here we see that when a charged particle is placed in electric field, then an electrostatic force acts on them. So the charged particle or charged body be accelerated in electric field. Here, according to Newton's law, charged particle be accelerated due to electrostatic force in field E with acceleration vector E. Okay, let mass of charged particle is small m, then vector F is equal to ma. So we have Q vector E is equal to ma. Then acceleration in field vector A is equal to plus minus Q vector E upon m. ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसके कारण जो वो एक्सेलरेट होगा, इस एक्सेलरेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है। तो ध्यान देना, जब भी एक्सेलरेट होती है बॉडी तो इस एक्सेलरेशन के कारण कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। अब ये आपने माइंड से जब करना चाहिए क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि व्हेन बॉडी बी एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी चेंज. So here we write down that the charged particle in electric field be accelerated by the electrostatic force, then the kinetic energy and the velocity of the particle will be changed. इसलिए यहाँ पे ध्यान देना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर आपने पढ़ा ही होगा. तो इसके आधार पर ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आगे कुछ और भी होंगे. टुमारो आई डिस्कस about them. Okay, thank you.